Prabhaji, if you want to start. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Ubhajayanam, Namo Loe Savasahunam. Jai Jinendra. We will start with page. Is anyone doing summary today, or are we starting to read? I'll be summarizing page number 53 to 57, which we covered yesterday. Okay. And I'm going to time you, so we need to do it within like 5 minutes or 6. Okay. Go ahead. Yes. Okay. Jai Jinendra Sabhi ko. I will be summarizing page number 53 to page number 57 of Krambaddha Paryay. As we have understood that along with 4 samvais like Kallabdhi, Kshetra, Mohnot, Nimit, Purusharth is as well prioritized. The presence of all the 5 samvai is a must to complete any karya. From Atma point of view, Purusharth means Puru is equals to Uttam Chetna Gun, Sete means Swami hokar प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं. ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं. मुक्ति के मार्ग में आत्मानुभवन की प्राप्ति को के प्रयास ही पुरुषार्थ है. When one has complete श्रद्धा on क्रमबद्ध पर्याय, then उस श्रद्धा के काल में दृष्टि का स्वभाव में ढलना ही अनंत पुरुषार्थ है और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है. As we Mithya Drishti believe that we are the doers of whatever we do, but that's not Purusharth. It is a Mithya. Purusharth here does not mean activities happening in Par. Purusharth means the process of knowing your Atma. Jnani Jeev प्रतिक्षण स्वभाव की पूर्णता के पुरुषार्थ की भावना करता है. गहराई से विचार करें तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है. क्रमबद्ध पर्याय and सर्वज्ञता both go hand in hand. This is what I conclude with. Thank you. Did her video, please? Yes, ma'am. Prabhaji, you said something? I think she's frozen for me. Is she frozen for everybody? Yes, Oh. yes. And that's what she was saying, that it Ha, must now be- she, Prabhaji, now you're unfrozen. Oh, it's my internet then. Yes. For me, I could see myself moving and everybody else was frozen. Okay. Okay, continue now. Actually, Dollyji just finished her summary. Oh, wonderful. Okay, so did you want to do Gandhar today, you said, right? ठीक है. Yes, ma'am. Yes. Chalo, I'll ask you your questions, okay? Ma'am, please go Okay. easy on me. तो अब मुझे इसमें बताइए कि क्रमबद्ध पर्याय जान के आपको सिर्फ जानते ही रहना है कि कुछ करना भी है? Of course करना है. Of course पुरुषार्थ इनिशिएटिव कहीं पे भी नहीं छोड़ना है. Definitely करना है. And the first thing जो करना है is that acceptance कि you are not the doer. जो होना है वही होगा no matter what. And और वो अच्छा, तो करना तो है, पर हम्म, क्या किसका करना है, क्या करना है? करने में बहुत फर्क है. And they have Okay. gone over this here. Yes, हमें here I'll be talking from Atma point of view because yes, worldly जो भी responsibilities है वो निभानी है, वो कर रहे हैं, होने वाले हैं, definitely. But when it comes to Krambaddha Paryay, you're trying to know your soul. That is what we have to do. Try the process of knowing the soul. Okay. Okay, so second question. कर्तृत्व का यहाँ निषेध किया है कि एक्सेप्टेंस बताई है इन few pages में. Okay, कर्तृत्व का यहाँ पे निषेध किया है again from not mithya point of view or from, as I said, not from the worldly things that we are doing, from dharma point of view.
you have to be a knower, not saying that, you are the doer. Kartrutva means to do things. So that's the reason कर्तृत्व का निषेध किया है. Okay. अच्छा, अब आप क्या करोगे जिससे कि अपने आप ही आपको आत्मा में रहना पसंद आ जाए? कुछ नहीं करना है. You just don't have to do anything. When it comes to, again, yes, my life or whatever, I just have to observe, और मेरी जो responsibilities निभानी है वो निभानी ही है. I don't have to react basically. And from dharma point of view, as much as swadhyay or what I can continue, that's what I have The to do. acceptance of Krambaddha is Yes. going to make you go to work. जब आपको पता है, when you firmly believe कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, चीजें अपने आप हो रही है, तो फिर पर में दृष्टि जाएगी ही नहीं ज्यादा. कल मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था ये बताने के लिए? I had said that कि ये क्रमबद्ध नहीं भी पढ़ा हो तो भी there are people who are able to do that. You gave a very good example of elderly people. They learned, throughout their whole life, they have done the same thing. I mean, they have performed all the responsibilities, but at the end of the day, they do realize that, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, and they start being indifferent towards everything. They become more of observer or jnata drashta, and they do not react, and they hold the maximum wisdom, as I might say. So that is wisdom, जो कि eventually after old age wisdom आ जाती है, after experiencing कि कितनी चीजें मैंने सोचा था मेरे हिसाब से चला लूं पर नहीं चली. Yes, yes. तो वो wisdom हम अभी से ले सकते हैं क्रमबद्ध को समझ के. ठीक है ना? Okay. चलो, done. Let's now go on to reading now. From page 57, the poetry verse at the end, and I can share screen. Right. Share the screen, and Nipa, are you able to read today? Yeah, I can read. And Nipa के बाद प्रिया जी read. Okay. That last, we are starting with that Acharya Kunkund. That's one. Okay. So आचार्य कुनकुंद अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, जो जानदी अर्हंतन दवत गुणत पज्यते ही सो जानदी अपणम मोहो खलु जादी तस्सलयम. जो जीव very very famous गाथा जिसके बहुत ज्यादा explanations, उस पे बहुत प्रवचन होते हैं. So okay. And I think it's गाथा 80 from प्रवचन सार, और लोगों को ये गाथा नंबर शास्त्र बहुत कुछ याद भी होता है. That's how important this गाथा is. From Pravachan Sar, you said? Yeah, Yes. it's in the footnotes. Oh, Yeah. got it. Yeah. It's in the footnote. I have studied it, so that's why I remember it. So okay, go ahead. Okay. जो जीव अरहंत अर्थात सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है और उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त होता है. इस गाथा में मोह के जीतने का उपाय बताया गया है. इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल रूप से तो कहा गया है कि जो आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट होता है, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है. इस प्रकार मिथ्यात्व के नाश के लिए अरहंत भगवान को जानना भी अनिवार्य कर दिया गया है. मात्र अरहंत को नहीं, अपितु उन्हें द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानना अनिवार्य किया गया है. अपने आत्मा और अरहंत भगवान के द्रव्य गुण तो एक समान ही शुद्ध है, पर वर्तमान पर्याय में अंतर है.
अपनी पर्याय अल्प विकसित और अशुद्ध है, उनकी पर्याय पूर्ण विकसित और शुद्ध है। Hemal, you're going to have to scroll the pages also when you display the book. इसमें स्पष्ट है कि आचार्य देव ने पूर्णता और शुद्धता जानने को कहा है। इस तरह उन्होंने पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता के ज्ञान को मोहनाश के लिए अनिवार्य माना है। यही कारण है कि आत्मानुभूति के साथ साथ सच्चे देव गुरु शास्त्र की सम्यक पहचान भी सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, प्राप्तिव्य है, आदर्श है, उसे प्राप्त करने के लिए ही सारा यत्न है, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप के पहचान बिना उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है। जैन दर्शन में मूलाधार सर्वज्ञता की आज संकट में पड़ गई है। हमारे कुछ धुरंधर धर्म बंधु पक्षव्यमोह में इतने उलझ गए हैं कि सर्वज्ञता में भी मीन मेख निकालने लगे हैं। आचार्य समंतभद्रा के कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए ही कहा गया है था कि उन्होंने कलिकाल में डंके की चोट पर सर्वज्ञता सिद्ध की थी। वे कोई स्वयं सर्वज्ञ नहीं थे, पर उन्होंने कलिकाल के जोर से संकटापत्र सर्वज्ञता को पुनर्स्थापित किया था, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। आज फिर कलिकाल जोर मार रहा है। आज युग को फिर एक समंतभद्र चाहिए जो डंके की चोट पर सर्वज्ञता को सिद्ध कर सके, पुनः स्थापित कर सके। मोह का नाश कर आत्मा श्रद्धान ज्ञान और आत्मलीनता के इच्छुक जनों को अनंत पुरुषार्थ पूर्वक मर पच के सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना चाहिए। सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय समाहित है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर ही होता है। ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता ही मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है। उस पर आरोहण का अनंत पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में समाहित है। इस प्रकार सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय एक प्रकार से परस्पर अनुबंध है। एक का निर्णय और सच्ची समझ दूसरे के निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का ही निर्णय सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के सन्मुख होकर होता है। यदि कोई व्यक्ति परोन्मुखी वृत्ति द्वारा सर्वज्ञता या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने का यत्न करे तो वह कभी सफल नहीं होगा। सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। जिस प्रकार जब तीर्थंकर किसी माँ के गर्भ में आते हैं तो उसके पूर्व स्वप्नों में आते हैं, उसी प्रकार जिस आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट होती है, प्रकट होने का पूर्व उसे वह समझ में आती है। सर्वज्ञता समझ में आए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। अभी तो सर्वज्ञता समझ में ही नहीं आ रही है, प्रकट होने की तो बात ही कहाँ है। सर्वज्ञता की समझ बिना, स्वीकृति बिना धर्म की उत्पत्ति की ही संभव नहीं है। तो फिर उसकी स्थिति, वृद्धि और पूर्णता का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा भी संभव नहीं है, क्योंकि सच्चे देव का तो स्वरूप ही सर्वज्ञता और वितरागता है। शास्त्र का मूल भी सर्वज्ञ की वाणी है। Hold here, Hemal, just turn off the sharing for a second. I'll quickly brief these two pages so that way, because I don't think you'll have much per paragraph per questions. So basically what they're saying is, पहले तो वो 80 का था कि अरिहंत को जानना अपने प्योर सोल को जानने के बराबर। ओके, क्यों अरिहंत का और सिद्ध नहीं का? अरिहंत सर्वज्ञ होने के बाद में भी he is in this world, he is around, ठीक है, पर फिर भी वो अपने द्रव्य में रह सकते हैं।
he's completely able to be in his soul. अब उनकी पर्याय का क्या होता है? पर्याय में तो क्योंकि वो अलाइव हैं, उनके कर्मों का उदय भी चलता है, उनके कर्मों के उदय, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म था, उनके दिव्य ध्वनि भी खिलती है, उनको बहुत सारी अनुकूल चीजें भी होती हैं, बिकॉज his पुण्य कर्म are coming to fruition, yet he is not disturbed. He's, जैसे बोलते हैं कि अभी जो हम देखते हैं तीर्थंकर की सपोज मूर्तियां देखते हैं, राइट, चौमुखी समझ लो देखा, राइट, so there will be no difference between seeing that murti and if there was a live Sarvagya Arihant. Why? Because जो जिसमें कषाय नहीं है, उनकी जो एक मुद्रा होती है, वो मूर्ति में देखो या लाइव देखो, सेम टू सेम होगी. दूसरा कि उसको सर्वज्ञ भगवान को जो, क्योंकि कषाय नहीं है, सर्वज्ञता है, he is still able to see in the world, but he is not using his इंद्रिय. अर्यंत अवस्था में वो, उनके सामने कोई आ गया इसलिए उन्होंने जाना, ऐसा नहीं है. वो pretty much उनकी इंद्रियां are not used. If your eyes are not used, right, blind person क्या करता है? एक ही चक उसकी रहती है आंखें, उसकी हिलती नहीं है या झपकती भी, पता नहीं, झपकती तो होंगी, बट आई डोंट नो. सो अरिहंत की जो मुद्रा, आईज भी इसलिए नहीं झपकती है, ही इज नॉट यूजिंग देम. उनका ज्ञान आत्मा से ही हो रहा है. तो इसलिए यहाँ 80वीं गाथा में लिखा है कि अरिहंत को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानना, मतलब बहुत डिटेल में जानना, बिकॉज ही इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा, आत्मा विच इज इन द संसार. तो आप उसको अपने अपने आत्मा को जानने के बराबर हो गया. तो दे आर सेइंग कि दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिक्वायरमेंट टू रिमूव द मिथ्यात्व, टू अंडरस्टैंड thoroughly कि I can also be in sansar and yet be devoid of being affected by anything. So that is a proof that it can be done. And that's why it is Arhant and not Siddha. सिद्ध तो चले गए, हम देख भी नहीं सकते उनको, और उनके तो कर्म भी नहीं है. अब कई, because there are a lot of things that you won't be able to prove. Just yesterday, we have a little group here which talks about different religions, and somebody presented Christianity में, या in fact संजीव गोदा की research के हिसाब से pretty much all religions of the world say that earth is flat or earth is definitely not round. ठीक है. Now, so right there is a question mark on Sarvagya. People always find reasons to doubt Sarvagya, right? कि science ने, but लोगों को ये नहीं समझ आता कि science is a very small subset of Sarvagyata. और अगर डॉली जी आप कुछ बोलते जा रहे हो बीच बीच में, और आपका म्यूट हो, in case you want to contribute anyway. So the point is that सर्वज्ञता के कुछ points तो yes they can be proved. The rest of it will have to be pretty much experienced. Now you can argue certain things that suppose Jain geography says or whatever, and then science. But then who is to say that the earth that Jainism is talking about is actually this earth that the science is talking about? हमारी जैन जियोग्राफी में तो कितने सारे मून्स हैं, 12 मून्स हैं, और कितने सारे वो हैं, पृथ्वियां हैं. But So Bharat Kshetra is the same for both. Bharat Kshetra doesn't mean India at all. Bharat Kshetra is huge, vast.
And it's like this earth is like a little dot in Bharat Kshetra. We misunderstood it because the name is the same, Bharat. So, in fact, there is a, I don't know if I can find it. वो जब चंद्रयान गया था ना, तो there was, I think it must be in team leaders group, I think, that somebody wrote that there's a lot of questions about this, that how come we are on moon and Jainism ke hisab se kya. So they had posted one of Sanjeev Ji's YouTube video about this. So if you can find it, go ahead and just listen to it. So Bharat Kshetra is way more than this earth. So the point is that scriptures mein jo aaya hai, see, remember, if I write something today that you all said, it will never be the exact same. Kyunki hamari buddhi ki limitation hai. That is one thing we must accept. Ki Bhagwan ne to Sarvagya ne to sahi bola. Phir, because it was verbal, right? So jab tak memory thi, tab tak to perfect chala. But once that started fading, tab wahan trutiyan aa sakti. And that is why there was a time frame when न्याय युक्ति ये सब बहुत जरूरी था, to prove कि जो शास्त्रों में ये बात सही है, ये बात सही नहीं है. सर्वज्ञ ने बोला, ओके, अब उसमें से हिंदुइज्म भी निकल गया, इस्लाम भी निकल गया, क्रिश्चियनिटी भी निकल गया. Just like today we see, each acharya has his own little panth, his own little books. That obviously must have been happening over time. But then how do you validate for yourself? तो वहां ये युक्ति न्याय आना बहुत जरूरी है. And these were the skills that were used to prove to people that there is actually a sarvagya. These are the reasons why it makes sense, and lot of these things. So इस तरह के तर्क वितर्क between religions में भी होते थे, and that was needed to understand and prove, to not to really necessarily show anybody down, but more to prove what is correct and what is not. And Prabhaji, how is all this It's related not like to what Deepa read? Okay. So the reason it relates to this book is that's what he's saying in these 3 pages. कि सर्वज्ञता को भी वो नहीं एक रेफरेंस दिया था उन्होंने, कौन सी, कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र ने सर्वज्ञता को सिद्ध किया. If you don't believe in sarvagya, you cannot believe in Krambaddha Paryay. Who is telling you about things are fixed? We cannot see future. So that is the point they're trying to prove here. What does Viksit mean? Development. Developed, yeah, developing. Ma'am, page number 58, last stanza. I have not understood that. जैन दर्शन की मूलाधार सर्वज्ञता ही आज संकट में पड़ गई है, because a lot of people don't believe in sarvagya. Okay, if they find one little thing that science has proved and it is not written in the Jain Shastra, they will start doubting it. And valid so, because obviously people have limited buddhi. They can only relate to whatever they can see today. Okay, so हमारे कुछ धर्मबंधु पक्ष व्यामोह means like suppose if you are Shwetambar or Murti Pujak or Digambar, maybe there is so many different sects. So if you are in a certain parampara and you are mohit towards that parampara, and that naturally happens. If you're born in a certain whatever, then that's all you've heard. So you are obviously a little bit partial towards that. Attached to one parampara. Yeah, paksha matlab parampara, paksha matlab one side of the parampara, and vyamo means uske attachment में इतने उलझ गए हैं कि सर्वज्ञता भी मीन मेक निकालने लगे. So they've started like arguing that ऐसा लिखा है और ऐसा नहीं है and things like that. So mean make means argue? No, mean make is like taking out, Pointing out mistakes. pointing out Like a fishing expedition?
like a fishing expedition. कमियां निकालना. Pointing out faults. Faults, yeah. And Dharundhar? Dhurandhar means Dhurandhar. very learned, the high up. Okay. But And then- again, I mean, these are not things that I want you to worry about. Like, I mean, it's okay if you're interested in knowing the meanings, but this particular paragraph is not of much importance. So No, what is, All so- it's saying is that people have doubts, and then Acharya Samantabhadra, he proved the Sarvagyata ki siddhi, even though he was himself not Sarvagya. Then how did he prove? By giving yukti proof. All along we have also been reading, right, that how do they prove that there is Sarvagya exists? Because past Prathamanu Yog ki stories say ki नेमिनाथ ने उस टाइम में ये द्वारिका जल जाएगी वो बता दिया था. Ma'am, here the last sentence There is so many stories. पर उन्होंने कलिकाल के जोर से संकटापन्न सर्वज्ञता को पुनर्स्थापित किया था. So here the sentence, उन्होंने कलिकाल के जोर से. कलिकाल means current times, difficult times. कलयुग कहते हैं ना, कलयुग जिसको बोलते हैं. Okay? तो they thought कि वो संकटापन्न मतलब it's coming, it's being jeopardized in the recent times. There was times when people were सरल, तो जो भी लिखा है easily मान लेते थे. ठीक है. Now people don't. As you see more and more, the kids want even more proof. They don't want to believe anything. हमको अभी इस science से समझा. अरे भाई, what is science? Who is science? Nothing. It's so recent. थोड़ी दो चार चीजें उन्होंने पता कर ली, उसका भी उनको अता पता नहीं है. आज बोलते हैं, कल उसी का opposite बोल देते हैं. I mean, does it make sense to believe that and not Sarvagya? But unfortunately, आज के युग में बुद्धि इतनी कम है कि people don't understand. उनको समझ ही नहीं आती until they see. अब समझो, गूगल में कुछ लिखा है, उसको लोग बिलीव कर लेंगे. प्रत्यक्ष तुम्हारे दादाजी बोल रहे हैं ऐसा है, उसको नहीं बिलीव करेंगे. So people forget that Google also is very, very limited. It's only stuff people have put in. और जो बुद्धू ने डाल दिया तो वही तुम्हें दिखेगा. so yeah, so can you explain in English that whole last sentence, right? Because it says that Acharya Samantabhadra. Basically, Acharya Samantabhadra, he has proven in the current times the Sarvagyata, omniscience. And He re-established, Punarstapit means he re-established the concept of Sarvagyata. And Just that's why like- he given the title Kalikal Sarvagya, even though he was actually not a Sarvagya. He re-established Sarvajnata in the same way that Kanji Swami has re-established KBP. Right. In अपने युग, अपने कलिकाल में he did that. Right. Basically वो established कलिकाल में that- उन्होंने समंतभद्र जी ने वो किया करके. Exactly. Prabhaji, in the next paragraph, what does Marpach mean? Marpach means come what may. where ऐसे is बोलते हैं तो मरपच के भी Second line, second paragraph, second line. मोह का Right. नाश का आत्मश्रद्धान ज्ञान. मोह का नाश कर आत्मश्रद्धान ज्ञान और आत्मलीनता के इच्छुकों को अनंत पुरुषार्थ पूर्वक, that you give your most effort come what may, जैसे बोलते हैं ना कि भाई something you really want to do, you will do it come what may. That means everything else is less important than doing this. It's what do you call it, like a proverb that's popular in India कि मर के भी तू ये काम तो कर ही ले. Yeah, It's accomplish a- at any cost.
और मरने की क्या रियली किसी को फुर्सत नहीं होती है. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि मर के पच के भी सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना चाहिए. नाउ निर्णय करना मीन्स इफ यू हैव एनी डाउट्स you make sure you clarify those and believe in it. Don't believe just because the book says so. Prabhaji, sometimes no, we say no, if you hear the same thing often enough, you start believing it. So is that your nirnay ho may gaya? be true, yes, but that's why they're saying here that initially you do prove it to yourself that it's worth believing. Then you again and again, if you listen to it, yes, you may be believing in it. And that happens in science. I mean, don't you see that they hammer you with, I mean, who is to prove that moon, kaun sa moon hai, kahan gaye? I mean, if you Google, there are all these articles about that nobody ever went to moon. Who are you going to believe? And they have their own proofs why they say so. All the conspiracy theories. There's a lot of controversial. That is why they say तुम्हें दुनिया की सारी पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है. तुम सिर्फ अपनी पंचायत कर लो, अपने आप को जान लो. That's good enough. बाकी सब when you become सर्वज्ञ, you'll find out all the misunderstanding and understandings and everything. So, because that's the only ultimate. But you know, Prabhaji, it is to be. It's a from. I can see why it's a very hard concept for most people to believe, right? Because It is because we are always involved in पर. हमको तो दुनिया well क्या as करने people- का मतलब है. We as well don't as people- bother to be inside. That's the problem. See, अगर हम really सच में ponder करें, right? कि साइंस ने आज कुछ कल कहा, कल उसको डिस्प्रूव किया, परसों उसको वापस ये कर दिया, वो कर दिया, then it would make logical sense to not be concerned with it. But people don't do that. लोगों को तो सामने टीवी में जो दिख गया, enough. Make up their mind. Prabhaji, over here it says कि But we ज्ञायक need to स्वभाव be के above and beyond that, more intelligent than the average person. Prabhaji, over here it says that Prabhaji, it says that ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होके ही ये निर्णय हो सकता है. And then they are saying that, so how ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख कैसे होने का? That means that I'm only the knower. तो वो Gayak होएगा is only कैसे? knower. Because वो हुआ तो निर्णय हो जाएगा, भगवान का, सर्वज्ञता का, सबका निर्णय हो जाएगा. तो वो मगर कह वो ही कैसे होगा? तो ज्ञायक स्वभाव में रहने का ही तो सारी गाथा चल रही. इतना सारा बता क्या रहे हैं आप? यस, मगर वही तो मेरे को नहीं समझ रहा है. ये बोल रहे हैं कि इसका निर्णय और, इससे होता है, मगर ये इससे होता है, तो इट इज दिस causes this and this causes this, and then they are both saying one or the other, one or the other. तो कुछ उसमें जमेगा कैसे? तो जमेगा ऐसे कि पहले तो सर्वज्ञता को आप प्रूव करो, which we have, right? क्यों हमने कहा सर्वज्ञता is possible? पहले वितरागता है तो there is no reason left to not know it all. ठीक है, वो हमने establish कर ली. अब सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय ज्ञाय स्वभाव के साथ. अब सर्वज्ञता है तो क्रमबद्ध है, क्योंकि सर्वज्ञ ने हमें बताया कि थिंग्स आर फिक्स. ठीक है, वो करने वो सब ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर ही होएगा. तो ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख जाने को ही हम ये पढ़ रहे हैं, अबाउट निर्णय कर रहे हैं. सन्मुख we can do. Sanmukh means closer to Gyayak Swabha. It doesn't mean completely be Gyayak. 100% Gyayak is different. भगवान. But yes, we can be Gyayak Swabha ke Sanmukh. It's like Samyak Drashti, Samyak Darshan ke Sanmukh, Samyak Drashti. He hasn't quite experienced the soul yet, but he's almost there. Oh. We all can experience moments of Gyayak Swabha. And we always are Gyayak. Whenever Padosi ka bachcha gir gaya, what are we? Only observer. We are not as bothered. So हमें तो आता है Gyayak स्वभाव में रहना. So we you just don't apply it all the time. So you're closer to Gyayak Sabhav, but then you're completely Gyayak Sabhav when you accept Krambaddha Paryay. That's what that sentence is saying. No. It says सर्वज्ञता और कर्मबद्ध का निर्णय. So you will be able to decide
that yes, Krambad is correct if you would stay close to your knower swabhav, gyata drashta. See, what happens? Like I told you the example of an old man. At 90, he realizes all my life, I really didn't do anything. I only observed what was happening. Because he realizes that whatever he had thought of his ideal family being like this and like that, and this kid doing that and that kid doing that, and everything didn't work out the way he planned it. Then the wisdom says that, no, really, I cannot be the doer. Things were happening. I was just mistakenly thinking I'm doing it, and I was only the observer. So what they're saying is that if you become like an observer, close to it, that's when you will be able to decide on the Krambaddha and Sarvagyata. And we all do, we all talk about it. कितने सारे उसके लिए निकल गए हैं कि मनुष्य करता, I mean, there is so many things that मनुष्य इच्छा करता है and it God's will, or there is some sentences like that. पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता. There is so many. So everybody understands it. But they are so much in the moha that they keep going back to doing. But Prabhaji, it could not just be moha, it could just be a really bad habit. I don't know about that. The bad habit comes from more, right? Yeah, but now we know the truth, but the bad habit is persisting because it's a bad habit. Now we are calling it a bad habit, and it's hard to break a habit. No, the reason is the more apnapan is the key to it. I still think जैसे divorce होता है, how come all that love and all that lust and all of a sudden vanishes? How? अभी तक तो वो इतना प्यारा लग रहा था husband और उसके ननंद और relatives. अपनापन जैसे ही छूटा, the whole link quickly broke. So you're saying अपनापन छूटेगा तो bad habit भी छूट जाएगा. Exactly. Yes. Sure. She had that bad habit of giving the tea every morning to the husband, doing this for him and doing that for him. And जैसे ही झगड़ा हुआ, divorce हुआ, what happened to all those habits? Gone. So, Prabhaji, what is the meaning of the word arohan? what do you call, like going upwards? Progressing? Yes, progressing. The wordsmither. And Prabhaji, just a quick time check. We are 45 minutes into class and we have finished up to page 59. Okay, let's go 2 more pages. That's the problem happens is that we so मैं क्या करूं? Either I just will explain and you guys just The truth is we learn a lot from this, I know, that's the reason these discussions are also important, and I cannot do these discussions in the air. So we have to read also. Okay, go ahead. We have to agree then to extra classes and not complain about it. That's it. Because Okay, we can't have everything. Can't have both, correct? Yeah. Come on, who's reading? Miniji, do you want to read from page 60? Yes, I can read. Okay, please. Is that it? There's nothing else on page 59 that's important, yes? No. Okay. I'll start from page 60 then. Important in 2 minutes, but then you guys ask me questions, this word and that word, and then obviously it's going to take time. Okay, go ahead. Okay. I'll start from page 60. मूल भी सर्वज्ञ वाणी है. गुरु भी वाणी है. गुरु भी तो. Start from the last 2 lines of page 59. सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना देव शास्त्र. That's not the last paragraph. That's सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा भी संभव नहीं है, क्योंकि सच्चे देव का तो स्वरूप ही सर्वज्ञता और वीतरागता है. शास्त्र का मूल भी सर्वज्ञ की वाणी है. गुरु भी तो सर्वज्ञ कथित बार्गनुगामी होते हैं. साधुओं को आगम चक्षु कहा है. सर्वज्ञ कथित मार्ग का निरूपण शास्त्रों में है.
शास्त्रों की प्रामाणिकता के अभाव में गुरु का स्वरूप भी स्पष्ट कैसे होगा? अतः देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझने के लिए सर्वज्ञता का स्वरूप समझना अति आवश्यक है। इसलिए तो तार ता, तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य समंत ब्रह्म ने देवशास्त्र गुरु की सम्यक श्रद्धा को सम्यक दर्शन के स्वरूप में शामिल किया है। वे लिखते हैं, श्रद्धानम परमार्था ना माप्ता गमतो भृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांग सम्यक दर्शनमस्यम्। 3 मूर्ता और 8 मद रहित तथा 8 अंगों सहित सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि आप कर्मबद्ध पर्याय को सर्वज्ञ के साथ क्यों लपेटते हैं? उसे सीधी वस्तु स्वरूप से सिद्ध कीजिए ना। भाई, हम लपेटते नहीं, वह लिपटी हुई है, क्योंकि सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना कर्म पर पर्याय की श्रद्धा एवं कर्मबद्ध पर्याय की श्रद्धा बिना सर्वज्ञता की श्रद्धा संभव नहीं है। यद्यपि सर्वज्ञता का सहारा लिए बिना भी कर्मबद्ध पर्याय की सिद्धि की जा सकती है, वस्तु स्वरूप के आधार पर हम विस्तार से कर्मबद्ध सिद्ध कर भी आए हैं, तथापि सर्वज्ञता से उसे अलग करने का आग्रह भी क्यों है? सर्वज्ञता के आधार पर कर्मबद्ध पर्याय सिद्ध करने का एक कारण तो यह है कि सर्वज्ञता जैन दर्शन में सर्वमान्य है, उसमें किसी को भी विवाद नहीं है। अतः कर्मबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का वह ठोस आधार है, तथा जिन लोगों को सर्वज्ञता की बाहर से ही सही थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उन्हें सर्वज्ञता के आधार पर कर्मबद्ध समझने में बहुत सुविधा रहती है। दूसरी बात यह है कि कर्मबद्ध पर्याय का विषय अति सूक्ष्म है, उसे सर्वज्ञता के आधार बिना साधारण बुद्धि वालों के गले उतारना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैं आपसे ही कहता हूं कि सर्वज्ञता एवं सर्वज्ञ कथित आगम के आधार बिना आप 1,00,000 योजन का ऊंचा सुमेरु पर्वत ही समझा दीजिए। आखिर आपको यही तो कहना होगा कि शास्त्रों में लिखा है और शास्त्र सर्वज्ञ कथित हैं। जब आप इतना स्थूल 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत भी सर्वज्ञता और सर्वज्ञ कथित आगम के बिना सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो फिर कर्मबद्ध पर्याय जैसे सूक्ष्म विषय के समझाने में हमसे सर्वज्ञ और सर्वज्ञ कथित आगम का सहारा छोड़ने को क्यों कहते हैं? क्या आपका विश्वास सर्वज्ञता और सर्वज्ञ कथित आगम में नहीं है? यदि है तो फिर ऐसी बात क्यों? सर्वज्ञता का आधार छुड़ाने की हट क्यों? लगता तो यह है कि आपको स्वयं सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं है, या सर्वज्ञता का स्वरूप आपकी दृष्टि में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और सर्वज्ञ की सत्ता से इनकार करने की भी हिम्मत नहीं है। अतः किसी न किसी बहाने से इस समर्थ हेतु से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। यदि सर्वज्ञता का स्वरूप आपकी दृष्टि में स्पष्ट होता और उस पर आपको विश्वास भी होता, तो कर्मबद्ध पर्याय की सहज स्वीकृत हो जाती। फिर भी यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि आप कर्मबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट, कर्मबद्ध पर्याय की बात छोड़ भी दीजिए, फिर भी सर्वज्ञता का निर्णय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं होगा। आई विल कंटिन्यू। चलो 1-2 मिनट में मैं क्विकली समझाती हूँ. So lot of it is just Bharanji's style of saying different things, so we don't necessarily need to understand each paragraph. So just 1 second, just turn off the thing and I'll quickly explain basically what he's trying to say. तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय सर्वज्ञता. किसने बताया हमको कि सच्चा देव क्या है? The other gist of these 2 pages is कि देखो, whether it is me explaining, whether it is Bharilji explaining, who are we? Of course, Bharilji is higher, more knowledge than me, but the point is that who are we? So bottom line is, सर्वज्ञ is everything. सर्वज्ञ ने जो कहा उसको ही हम मानते हैं. सर्वज्ञ से जो गुरु सर्वज्ञ की बात समझाता है उसको ही हम मानते हैं. जो शास्त्र सर्वज्ञ की वाणी से लिखे गए उसको ही हम मानते हैं. हम we just don't trust any टॉम डिक एंड हैरी जिसको बोलते हैं कि एनी साइंटिस्ट ने कुछ भी बोल दिया दूर आदि रिसर्च करके, वो हमारे लिए इनफ नहीं है. या मैं अपने घर की बात कह दूं वो इनफ नहीं है. हमको तो प्रूफ चाहिए कि ये बात सर्वज्ञ से आई है. that's the gist of these 2 pages. कि इसलिए सर्वज्ञता में बिलीव करना, उसको क्रमबद्ध के साथ टाई अप करना बहुत जरूरी है.
It's not just coming up in the air like that, is all he's trying to say. Prabhaji, Okay, let's one move thing on. I want to make a point here is then, we have already done Sarvagyata ki Nirnay because we are believing everything we've learned till now, because everything we've learned till now comes from Sarvagyata. Right. So then hamara to Nirnay ho Yes, gaya hai, and we so- can already the purpose of learning. See, it's like somebody told me कि मैंने तो इतने सारे संजीव जी के लेक्चर सुन लिए, इसके किसी और के सुन लिए. Fine, wonderful. But the thing is, you got that knowledge from those videos, from the knowledge. Okay, but your own doubts are not clear there. That's the whole purpose of coming to class. Yes, yes. Because you can read Shastra, you can listen to lectures on YouTube, you can do all of that. Yet, if you have that little doubt, then the whole lecture is useless for you because you didn't believe in what you heard. And that's the whole purpose of coming to class, is that you get your own doubts resolved. कि तुमको वो, I know Tulika writes to me, sometimes she will send me something she read or something she heard, and she says, अब इसको मैं कैसे समझूं? And then one time she wrote that मेरे Krambaddha Paryay की first 2 classes में उसको she got her own answer. So that's the whole purpose, because eventually it's not about did Hemal understand it. It's about did I understand it? Did I convince myself? If Hemal is asking questions, she's convincing herself. That's not going to convince Priya or anybody else. It may if they had the same question. But everybody has to have their own understanding. And what is the meaning of Agam Chakshu? Agam Chakshu means that seeing it from the Agam's viewpoint. So whatever, it's like, what do we have right now? We have like the Jainism Chakshu. So like, to me, whenever if the Hindu person says ki Hindu geography mein aisa likha hai, ya there was just this thing about that Modi called this moon wherever they step Shakti area on the moon. So to them, Shiv may be that one personality with the moon and whatever. To me, it's never going to be like that. To me, Shiv means pure soul. So that is like my Jain Chakshu or Agam Chakshu. And in my mind, it's always going to be, these people don't even know what is Shiv. It's just a made up thing. But galat manyataएं भी चलती जाती है for generations. What can you do? And it's not our responsibility to teach them. उनकी responsibility है कि उनको खुद को prove करना पड़ेगा कि how can we be so. Is she frozen for everybody? No, she is. Yes, We yes, know yes. that these are all made up things. Mhm. So, but that's the reason we don't worry about, or we don't focus on the rest of the world. We focus that I get the truth. Because I Got can it. only do my kalyan, not even my kids or तो दूसरों को तो छोड़ ही दो एकदम. I can start Okay. screen share. Yes. Miniji, can you continue, please? She's not on mute, is she? Yeah, I'm Okay. sorry. देवशास्त्र गुरु की रक्षा का नारा लगाने वालों ने कभी देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप पर भी गौर करने का कष्ट उठाया है? क्या सर्वज्ञता को समझ बिना देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा या समझाया जा सकता है? आगम के संरक्षकों को क्या यह भी बताना पड़ेगा कि आगम की सबसे पहली शर्त है उसका सर्वज्ञ कथित आप्तोपज्ञ होना तथा सर्वज्ञ कथित आगम निश्चित भविष्य की असंख्य घोषणाओं से भरा पड़ा है? क्या करुणानुयोग का एक भी विषय बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध किया जा सकता है, समझाया जा सकता है? क्या आप 8 कर्मों की सत्ता, उनका बंध, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उद्वेलन आदि बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध कर सकेंगे?
इसी प्रकार अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणामों की सिद्धि का आधार क्या बनाओगे? इन संपूर्ण विषयों व इस प्रकार के अन्य विषयों के पठन पाठन के समय आपको यह प्रश्न क्यों उपस्थित नहीं हुआ कि सर्वज्ञ कथित आगम के आधार बिना इन्हें सिद्ध किया जावे? आज ही यह कि नया प्रश्न क्यों? भाई, जैसा कि कहा गया है कि सर्वज्ञ धर्म का मूल है, तदनुसार धर्म रक्षकों को सर्वज्ञ का निर्णय तो करना ही होगा। आखिर एक जैन दर्शन ही तो ऐसा दर्शन है जो प्रत्येक आत्मा के परमात्मा बनने की बात करता है। बात ही करना नहीं करता, परमात्मा बनने का मार्ग बताता है, उस पर चलने की प्रेरणा देता है और छाती ठोक कर विश्वास दिलाता है कि इस मार्ग पर चलने वाले अवश्य परमात्मा बनते हैं। क्या परमात्मा बनने के पूर्व परमात्मा का स्वरूप समझना भी जरूरी नहीं है? यदि है, तो फिर सर्वज्ञता की चर्चा से विराम का आग्रह क्यों? कर्मबद्ध पर्याय का ही क्या? आचार्यों ने तो समस्त जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वज्ञता के आधार पर ही किया है। हम किस किस सिद्धांत की प्रतिपादन में सर्वज्ञ और सर्वज्ञ कथित आगम को तिलांजलि देंगे? परमात्मा बनने के लिए क्या अपनी आत्मा को जानना, अनुभव करना आवश्यक नहीं है? आचार्य कुन के उक्त कथन में तो स्पष्ट ही लिखा है कि जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है, वह मोह का नाश करता है। उक्त कथन में स्पष्ट निर्देश है कि मोह का नाश करने के लिए आप अपनी आत्मा को जानना जरूरी है, और अपनी आत्मा को जानने के पूर्व अरहंत यानी सर्वज्ञ को जानना जरूरी है। क्या देवशास्त्र गुरु की रक्षा उनके स्वरूप को जाने बिना ही हो जाएगी? वे तो अपने स्वरूप में सदा सुरक्षित ही हैं। उन्हें हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें उनकी सुरक्षा करनी है, तो उनके सही स्वरूप को समझे। इसमें ही हमारा और हमारे धर्म की सुरक्षा है। धर्म रक्षा की बात करने वालों को थोड़ा बहुत ध्यान इस ओर भी देना चाहिए। आगे चलकर उसी प्रवचन अनुसार की 82 गाथा में कुंद कुंद आचार्य घोषणा करते हैं, सब्दे भी यह अर्हंता तेण विद्याणेन खविद कमंसा किंचा तदो वदेसम रियवादा तेड़मो तेसिन। सभी अरहंत भगवानों ने अपनी विधि से कर्मों का क्षय करते मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य आत्माओं को परमात्मा बनने का उपदेश भी वही दिया है, अर्थात वही मार्ग बताया है। ऐसे अरहंतों को नमस्कार हो। उस विधि से अर्थात 80-81वीं गाथा में बताई गई विधि से उन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया तथा उपदेश भी वही दिया। 80 से 81 गाथा में बताया गया है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह नष्ट होता है। तत्पश्चात राग द्वेष को छोड़ शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, अर्थात पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। यह विधि सर्वज्ञता प्राप्त करने की है, जिससे सभी अरहंतों ने सर्वज्ञता की प्राप्त की है और प्राप्त करने का उपदेश दिया है। प्रवचन अनुसार गाथा 82 की टीका भी में आचार्य अमृतचंद ने यह कहा था कि सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रकारांतर संभव है। अंत में आचार्य अमृतचंद कहते हैं, अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यस्थित हो गई है। तथा 82वीं गाथा की ही उत्थानिका में वे कहते हैं, भगवंतों द्वारा अनुभूत एवं बताया गया कि यही एक मोक्ष का पारमार्थिक मार्ग है। इस प्रकार बुद्धि को व्यवस्थित करते हैं। अरे भाई, जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है, उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है। जैसे चलती रेल में बैठे व्यक्ति को जमीन चलती नजर आती है, पर जब विवेक से विचार करता है तो प्रतीत होता है कि जमीन तो अभी अपनी जगह पर स्थिर है, चल तो मैं ही रहा हूँ। उसी प्रकार अव्यवस्थित मति वाले को जगत अव्यवस्थित नजर आता है। यदि गंभीरता से विचार करें तो पता चल सकता है कि जगत को अव्यवस्थित नहीं करना है, वह तो अव्यवस्थित ही है। मुझे अपनी मति I have व्यवस्थित to करनी say है। the word is व्यवस्थित नहीं करना है, वह तो व्यवस्थित ही है। हाँ, लास्ट लाइन इज व्यवस्थित। यदि गंभीरता से विचार करें तो पता चल सकता है कि जगत को व्यवस्थित नहीं करना है, वह तो व्यवस्थित ही है। मुझे अपनी मति व्यवस्थित करनी है। Okay, let's stop here. Okay. हम्म। तो अब ये 3 पेजेस में बताया है कि he is again same thing कि
बता रहे हैं, whenever we explain, you can stop the share, Hemant. Yes. And next time we share, try to put your cursor there. I want to know if YouTube will record whoever is reading, if you keep moving the cursor, we'll just try that. Anyway, so अब यहाँ पर बताया है कि again same thing, पहले तो सर्वज्ञता की सिद्धि, पर फिर बताया कि आगम के संरक्षकों को क्या, ये भी आगम की सबसे पहली शर्त है उसका सर्वज्ञ कथित, मतलब उसको एक रत्नकरण श्रावक आचार्य ने सर्वज्ञ कथित को आप नाम दिया तथा सर्वज्ञ कथित आगम निश्चित भविष्य की असंख्य घोषणाओं से भरा पड़ा है. Now, the way he is trying to prove is कि because in Agam everything has been explained, कर्म के details, कर्मों के even other karanapur, even so much detail of what internally happens to karma, that there is no way we could have understood any other way other than the Agam reading, right? So then what he's saying is, when you were reading about karma, that time you didn't say ki sarvagya ka aadhar kyun hai, but only here why you are questioning. But again, this doesn't apply to us because we are not questioning. So all this explanation he's giving, if somebody questions ki Krambaddha Paryay or sarvagyata ko alag rakho, so in reference to that he's explaining ki kahan iska reference aaya hai. प्रवचन सार की 82 गाथा में भी वही कहा है कि अर्यंत के को द्रव्य गुण पर्याय से समझो. तो मोह का नाश करने के लिए अपनी आत्मा को जानना जरूरी है. अपनी आत्मा को जानने के लिए पूर्व अर्यंत सर्वज्ञ को जानना जरूरी है. So which we are doing all the time, right? We already understood the swarup of Aryan. Whenever we talk about karma, we reference that. We are continuously understanding that. Okay. Again, it's like he's talking to somebody who hypothetically is arguing about it कि सर्वज्ञता की क्या जरूरत है क्रमबद्ध पर्याय को समझने के लिए. But just a general read is okay. And अब वो व्यवस्थित अव्यवस्थित, basically the gist of the whole thing is that the sansar, the world is vyavasthit. We have to make our buddhi vyavasthit. No, sansar is avyavasthit. No, sansar is vyavasthit. Our buddhi is avyavasthit. Last example, which we just read about the train, right? Because our misunderstanding, we are thinking something else is moving when actually we are moving. Or vice versa also happens. You're sitting in a you're stopped Car and you think car next to you moves and you think you moved. Yeah. So the fault is within you, not the other side. It's almost like all illusions. It's all illusions, yes. Yeah. Prabhaji, So things, I had a question. It's like watching a movie. Movie is playing the way it's recorded. If you misunderstand it, it's your problem. Mm-hmm. That's right. I had a question, Prabhaji. Up till now, the Sarvagata, Krambaddha Paryay, I mean, those are the, I can understand. But why is this focus suddenly going to ke Arhant ko samjho to Atma ko samjhoge? Because I'm thinking ke Arhant is not in our day and age. There is no Arhants now. So were they talking of the time when the Arhants were there, that it is easier to understand? No. They are talking of the times jahan Arhant ka description aata hai. So in Pravachan Sar 80 Gatha, they go into a lot of details about Arhant ke gun dravya paryay. Because Arhant ke case mein unki sarvagyata hai, right? So his gyan gun, his darshan gun, all of those have reached perfection. Right. And then his paryay still has some dosh because of the karma ka uday and all those. Now, what they're saying is कि उनकी जो अभी की पर्याय, उनकी जो अभी की दशा है गुणों की, वो मेरे, when I reach the purity, it will be, my soul will be exactly like that. That's important to understand and believe in it, that what I see in Aryan Siddh is my own future.
My own. Oh, I see. Okay. I thought it is. So it is also applicable Means the in this past day. is my current. Okay. Okay. Got it. But I This think current it's, will to your be my point, I think it's really more just trying to connect Krambaddha Paryay with Sarvagnata, right? So if Arihant him And सर्वज्ञता कहाँ मिलती है? अरिहंत में. सिद्ध तो बताते नहीं है. Arihant is the how we find out about Right. things. Right. And that's Even though how. Siddha is also Sarvagya, but Arihant is the one who tells us. Got it. Okay, keep going. Prabhaji, I have a question. What does this sentence mean? प्रवचन सार गाथा 82 को टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने यहाँ तक कहा है कि Gata 82. Now, since we haven't read Pravachansar yet, the way these grants are written is that so originally जो आगम लिखते हैं, suppose कुंद Acharya wrote agams, right? He didn't have any facilities of writing, so he was roaming. तो वहां जो आसपास में लोग थे, वो अच्छे साधु को जब विचरते हैं, पुराने जमाने में ऐसे नहीं होता था, वो उपाश्रय में बैठे हैं, there is a gathering going on and he's giving a sermon. वो तो अपनी आत्मा में मस्त जंगलों में घूम रहे हैं. But when the people saw, then they told him to tell them the truths. So he did whenever he could. And then people realized that they won't be able to remember. So they made these tools out of sticks, some sharp tools, and gave him the tad patra. They cut up the whatever tad ped ka leaves, made a proper like a rectangle shape, these leaves, which I've seen when I went to India in those areas, and told Acharya to write for them these things. Okay. So basically he punched holes and wrote these things. Okay. Now, obviously he didn't write all these paragraphs. He only wrote in this survey, the Arantanam mode, right? With whatever language was practiced at that time. Those two lines then were explained by some very knowledgeable acharyas of those times, much later than Kunta Acharya. So that's what tika means. So tika means explanation. But the question I had was, सर्वज्ञता पाप करने का प्रकारांतर असंभव है. Why असंभव? And what is प्रकारांतर? Oh, मतलब कि और That's उसका the part I didn't get. उपाय नहीं है. What? Sorry? With the vidhi, मतलब with the process, आचार्य अमृतचंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि सर्वज्ञता प्राप्त करने का और कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. Oh, so they are not saying that सर्वज्ञता is असंभव. No. Oh. They are saying to reach sarvagnata, you have to understand sarvagnata. And prakarantar असंभव है means what Process. again? Prakarantar means process असंभव है. दूसरा कोई उपाय. यहाँ दूसरा तो लिखा नहीं है. देखो, सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रकारांतर, that means दूसरा उपाय संभव नहीं है. प्रकार में अंतर. प्रकार means process, अंतर means difference. So no other process is possible. Oh. Which translates into दूसरा उपाय नहीं है. Okay. I'm reading this, I have come to a conclusion that we are depleted versions, physically, mentally, as well as emotionally or spiritually, whatever you say, as compared to what they were. Of course, yes. And again, this is Krambaddha. काल के प्रभाव से उन्होंने already बताया है. Compared, see, that's another thing. And in this short span of our living, also we can see. ठीक है ना? Now people say science ने इतनी तरक्की कर ली, science ने इतनी तरक्की कर ली. कुछ नहीं किया science ने. Even NASA has Jain geography books.
that they follow to reach certain things. What is science? It's only rediscovery. They never call it, they're not like, they're not creating things. They're only discovering things that are already exist. जो सर्वज्ञ ने already बताई है, उसको वो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं और फिर प्रूव करते हैं. ठीक है ना? So there is nothing that new happens. And yes, sir, उसमें ही क्रमबद्ध में सर्वज्ञता ने बताया है कि ये काल चक्र की बात आई है, that fourth ara, fifth ara, we are in fifth ara, that the mind is going to be not as smart, वक्र बुद्धि होगी, argumentative बुद्धि होगी. तो वो तो इतने हजारों साल पहले उन्होंने लिख दिया था, पर अब हम तो आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो aren't we proving it to ourselves? We are. And within this little short span, we are already seeing, compared to my grandfather, my children are so much more argumentative. My parents could just simply accept. Parents ne bol diya, done, ho gaya, done. Now your kids, no, they're not going to listen. So those are little things that we are going to be able to observe and prove that yes, सर्वज्ञता कोई चीज थी, क्यों उनको पता चल गया? वो तो थे नहीं, उनको कैसे फ्यूचर दिख गया? So Prabhaji, they said two things in that Vyavasthit, Avyavasthit paragraph. One is Buddhi Avyavasthit hai, and the second thing they said is Mati Wale Avyavasthit hai. What Buddhi are and the Mati two is same distinctions? thing. Buddhi and Mati Mati is same? Same thing, same. Okay. But no, it is not, because over here the sentence starts. उसी प्रकार अव्यवस्थित मति वाले को जगत अव्यवस्थित नजर Read it आता as है. अव्यवस्थित बुद्धि वाले को. No, but he's saying उसी प्रकार. That means in the same way that बुद्धि अव्यवस्थित वाले No. को. Okay, I'll read the sentence. जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है, उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है. कैसे चलती रेल में बैठे व्यक्ति को जमीन चलती नजर आती है, पर जब विवेक से विचार करता है तो प्रतीत होता है कि जमीन तो अपनी जगह पर स्थिर है, चल तो मैं रहा हूँ. उसी प्रकार अव्यवस्थित बुद्धि वाले को, मति वाले. एब्सोल्युटली यस. उसी प्रकार रेल का एग्जांपल दिया, फिर पूरे वर्ल्ड का एग्जांपल दिया, बट विद द सेम अव्यवस्थित बुद्धि वाले को. कंफ्यूज माइंड, ट्रांसलेट दैट इनटू लाइक कंफ्यूज माइंड. अच्छा. नहीं, बट इन द फर्स्ट बुद्धि वाले को भी दिखा है ना, जगत अव्यवस्थित दिखता है. राइट. और अमति वाले को भी अव्यवस्थित मति वाले को भी जगत अव्यवस्थित नजर आता है. He is just using another synonym of buddhi, and in English also you'll find other synonyms. Okay. Mati usually can relate to usually it's buddhi, but let's say my point of view. Mat means point of view. And that's why these kind of books are going to be very difficult to translate. Because Dollyji, they are saying जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है, उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देती है. You misreading because it. I have not set in my mind to accept that the things are happening the way they're supposed to happen. Because I have a bias towards how things should be, like a young person dying. I have a bias that a young person should not die. Uski death to vyavasthit thi. It's my bias. You can say bias, opinionated person. Got it. Prabhaji, can we now finish reading all the way to 67, whoever picks to read? Yes, go ahead. I can read? I can read. Yeah. 1 second, I'll do screen share and read. Okay. पर ये अव्यवस्थित मति वाले लोग जगत को व्यवस्थित करने के विकल्पों में ही उलझे हैं, जो सुलझने का यत्न करते हैं और अधिक उलझते जाते हैं, क्योंकि जहां अव्यवस्था है वहां उनका ध्यान ही नहीं, और जहां सब कुछ पूर्ण व्यवस्थित है
यहाँ कुछ भी फेरफार संभव नहीं है। ये लोग वहां के व्यवस्थापक बनने के की धुन में विकल हो रहे हैं, और तब तक होते रहेंगे जब तक कि स्वयं अपनी मति को वस्तु स्वरूप के अनुकूल व्यवस्थित नहीं कर सकते। एक बात यह भी तो है कि कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त प्राणियों की मति व्यवस्थित हो भी तो नहीं सकती, क्योंकि व्यवस्थापक बनने की धुन में मस्त जगत यह स्वीकार कैसे कर सकता है कि जगत स्वयं व्यवस्थित है। यदि जगत को स्वयं व्यवस्थित मान लेंगे तो वे व्यवस्थापक किसके रहेंगे? उनके व्यवस्थापक बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि जगत अव्यवस्थित हो, अन्यथा वे व्यवस्था किसकी करेंगे, क्या करेंगे? यही कारण है कि व्यवस्थित व्यवस्था व्यवस्थापकों की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उससे उनके अहम को चोट लगती है। व्यवस्थापकत्व का अधिकार छीनता है। व्यवस्थापक को तो एक अव्यवस्थित जगत चाहिए, जिसकी व्यवस्था वह करे और शान से व्यवस्थापक बना रहे। यही कारण है कि सुनिश्चित स्वयं चालित व्यवस्था जगत को समझ में नहीं आती और उसकी मति व्यवस्थित नहीं होती। सर्वज्ञता और कर्म पर्याय की श्रद्धा प्रतीति बिना मति व्यवस्थित हो ही नहीं सकती। चाहे कितना ही ईमानदार व्यवस्थापक क्यों न हो, व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत नहीं हो सकती। स्वयं चालित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत होती है। स्वयं चालित एक तुलने की मशीन है जिसमें 10 पैसे का सिक्का डालने से आपका सही वजन ज्ञात हो जाता है। उस मशीन के जितने भी व्यक्ति अपना वजन ज्ञात करेंगे, उतने 10 पैसे के सिक्के उसके पेट में अवश्य निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैसा न डाले और अपना वजन ज्ञात कर ले, चाहे वह उस मशीन का मालिक ही क्यों न हो। उसे भी यदि अपना वजन ज्ञात करना है तो मशीन में सिक्का डालना ही होगा। किंतु ऐसा आदमी चिराग लेकर ढूंढने पर भी शायद न मिले कि जिसके जिम्मे कांटा कर दिया जाए और कहा जाए कि जो तुले उससे 10 पैसा ले लेना। वह स्वयं तुलेगा और पैसा जमा नहीं करेगा। अपने बच्चों को तोलेगा और पैसा नहीं देगा। क्या संभव नहीं है कि जितने आदमी उस कांटे पर तुले उतने पैसे उसके स्वामी को प्राप्त हो ही जाएंगे? अतः स्वयं चालित ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ठीक है, सही है, पर व्यवस्थापक इसे नहीं मानेगा, क्योंकि इससे वह बेकार होता है। उसका कर्तृत्व छीनता है, अहंकार टूटता है। यही कारण है कि उसकी मति व्यवस्थित नहीं हो पाती। व्यवस्थित व्यवस्था में बेईमानी संभव नहीं है। यही कारण है कि जो नियमित क्रम अर्थात व्यवस्थित व्यवस्था को भंग कर समय के पहले काम कर लेने की भावना रखते हैं, उन्हें व्यवस्थित व्यवस्था सहज स्वीकार नहीं होती। पैसे से आज क्या नहीं हो सकता, पैसे क्या नहीं मिल सकता, पैसे से क्या नहीं मिल सकता। पैसा एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई नियम नहीं चल सकता। उसके सामने सब व्यवस्थाएं बेकार है। पैसों के बल पर मैं जो चाहूं कर सकता हूं। पैसों से सारी व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। इस प्रकार के या इसी प्रकार के अन्य किसी अभिमान से ग्रस्त बेईमान जगत की मति क्या व्यवस्थित होना असंभव है। असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। उसे एक व्यवस्थित व्यवस्था अर्थात क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होना आसान नहीं है। पर भाई, इस मनुष्य भव में करने योग्य तो एकमात्र यही कार्य है कि हम अपनी मति को व्यवस्थित करें।
सर्वज्ञता के निर्णय से, कर्मबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है, कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, सहज ज्ञाता दृष्टापन्ने का पुरुषार्थ जागृत होता है, पर में फेरफार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। सर्वज्ञता के निर्णय और कर्म पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात जब वही आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति की वृद्धि करता जाता है, तब एक समय वह भी आता है कि जब वह पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। अतः मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु बंधुओं को मरपच के जैसे भी बने सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सर्वज्ञता का सही स्वरूप ख्याल में आते ही कर्मबद्ध पर्याय स्वयं समझ में आ जाएगी। उसके लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना होगा। पर ध्यान रहे, सर्वज्ञता परोन्मुखी वृत्ति से समझ में आने वाली वस्तु नहीं। सर्वज्ञता की पर्याय के सन्मुख हुई दृष्टि से भी सर्वज्ञता नहीं समझी जा सकती। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। कर्मबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय है। सभी प्राणी कर्मबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर स्वभाव सन्मुख हो और अनंत शांति व अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करे। कालांतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त कर परम सुखी हो, इस भावना के साथ विराम लेता हूँ। Okay. So Prabhaji, yeah, I mean, can they, I know that he keeps referring to Krambaddha Paryay or Sarvagnata, and that one cannot exist without the other, rather that, right? Sarvagnata cannot exist unless you accept that. But you could say that with any other principle that we're studying in Jainism too, correct? So is he using that more to prove Yes, the... that is true. Yes, Vastu Swatantrata bhi sarvagita sarvagya nahi hame batai. That is true. But basically here he is saying that sarvagita more proves it. That's our ultimate proof. Even though we see it day to day, I'll give you quickly some few examples of this, right? So when I went to India last time, I did 2 trips. I attended. Ek to humne 10 din ka shivir attend kiya tha, right? Going to south and all those things. And it was amazingly, I mean, there is just so much preparation. Preparation means vyavastha. Think about taking 1,800 people in a train, you know, providing food before sunset to all these people. And then there is singing in the train, there are lectures in the train, there is decorations in each of the compartments. There is just so much. So like they were preparing for at least 1 to 2 years prior, just for this 10-day thing. Now, obviously they did the best they could. Vyavastha to kitni karni padi hogi, think about it, right? Now we went on the trip and we had an option. NRIs could take a flight and directly go to Bang, whatever that place. Or then we wanted to experience the train. So we said we'll do it. And then it was not a, the whole train obviously was not AC. It was, whatever class it is. Okay. So there was no air conditioning. But we opted to just experience it. And we thought agar beach mein hame lagega ki it's too, not so good, then on the return, we won't take the train and we'll fly back. Now, all this preparation they had done for 2 years. We leave from Ahmedabad. And because it's a private train, we were on a low priority for the signals. So, right, the express trains, they have to make sure they go first. Now, if they get delayed, this poor private train is again delayed. And delayed more and more and more. Now, we were supposed to get food in Baroda.
They arranged 1800 people ka food. Turns out it's already dark by the time we reach Surat. It's for right away they had to get khakra, chavanu, whatever, and feed these 1800 people. You cannot feed after dark. What happened to all this 2 years of avastha? So then they realized, जो क्रमबद्ध में जो होना था सो हुआ. They couldn't help it, even though they spent so much effort, so much money, everything they did to their best abilities. They still couldn't. So Prabhaji, they ate in the night then? So they did not eat in the night. That's what I'm saying. But you said they ate khakra chawanu. That At is what 5 o'clock before it was dark. Oh, so they ate snack at 5 o'clock instead of dinner because they were not going to arrive there before night anymore. correct. Okay. Yeah, or vice versa, whatever. Baroda came first or Surat. No, sorry. I may be confused with the details. Maybe we were supposed to get dinner in Mumbai because Baroda comes before Surat. So I was wrong on that. So, so maybe Mumbai we were supposed to get dinner, and Surat may because they realized that it's going to get dark by the time they reach Mumbai. So they gave us within that few minutes they had to call arrange for some food because then everybody will go hungry. So the point is कि व्यवस्थापक को तो लगता है कि मैं सब व्यवस्था कर रहा हूँ, पर कहाँ काम आई उसकी व्यवस्था? He doesn't know that things are already planned out. It will happen whatever is to be happened. Even the fact that they will find somebody last minute to provide khakras and chavanu for 1800 people is not a joke. Not a joke. So these are little examples that you will find in your own life. That you know, every wedding that happens, people think, oh my God, theirs was the best because they did this preparation, they did that preparation, blah, 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 blah. Really, there is no such thing. Krambaddha mein jo hona tha, it just falls in place and happens. You can cry about you planned it and didn't happen, or you can just be very happy, maine itna acha kar liya, this and that. All that is like really pointless. So that was one episode. Then when we went to Indore, and it was a sad thing that Prince Sanjeev ji, his PhD was in Jain geography. He's the one who had designed that temple. He had a major role in explaining all that in the whole Pratishtha. 10-day Pratishtha was 25,000. I don't know how many thousand people were there. And I found out that there was something wrong the moment we reached there because Dollyji had told us. But I was still hoping that he would be back, And inside, it kept bothering me that he's not there because, you know, he's the one who did this whole thing, and we would have wanted to hear from him. Now, me versus some third person who doesn't even know Sanjeev ji, it didn't matter to him. To him, it was all normal. Pratishtha went on wonderfully. Why was I bothered? I knew Sanjeev ji personally. I knew this was his expertise. I knew that he had planned this whole temple out, and I would want to hear him. So my mind was avyavasthit. To another person, it didn't matter. The things went on wonderfully. But because I had this notion that Sanjeev ji should have been there, that it was bothering me. Even though in my own mind, I also knew Krambaddha, ki bhai, I mean, you know, whatever has happened, if he's not destined to be here, he won't come back and whatever. Prabhaji, you have made Nirnay of KBP, but still you had Vyakulta in that moment. Exactly. I wouldn't call it Vyakulta, but yes, that Restlessness. but the fact that he should have been there to explain the first hand, the person who was all into it, who did it all, that little, I don't know what I would call it. I mean, exactly not Vyakulta. You had an expectation of him doing that, and that expectation would not be met. For that, even though you get reminded then again that if it is destined to be, he will be back. And if not, he won't be. I also accepted that fact at the same time as the thought came to me that it would be nice if he was there. But for the person who didn't know him, didn't know any of this background,
So in your life, you will continuously experience these things. And you should be like looking for those experiences to apply these principles. Because reading the book is not enough. Reading the book, they're giving you so many examples, yet you will forget them until you make it your own. So what then at the end he's saying that, those who want to get the moksha have to get this Sarvagita set into their minds. And the only way you'll set into your minds is you apply in day-to-day life. जब मैंने तो ऐसा सोचा था पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? Or I had so much money, people say, oh, I'll give you another example. This is all Indriya Janit Sukh, right? So we are associated with a lot of people who have millions of dollars, like tons of doctors who have so much extra money floating around that they will invest in India. They have bungalows in India. They have this in India and that in India. So recently, I just overheard this one person talking about, some younger person who doesn't have as much money, probably telling this one guy that, oh, आपका तो वो बंगला वहाँ है, आप वो जाके enjoy कर लो, this and that. क्या अच्छा है, आपको तो मजा है, इंडिया में जाके आप enjoy कर सकते हो, you have your own bungalow and your servants and whatever. You know what he said? He said with age, the Indriya also gets shitil and you cannot enjoy the sense as much. They didn't have to read Krambaddha. Being aged also, he understood this fact that money cannot possibly buy you happiness. So same vacations that you enjoyed when you were younger, now you can take me to Paris, it won't make me as happy as it did in 1980. That's why they say, no, do it when you're young. Later, you're not going to have so much fun. But for us to understand is what? It is so dependent on Indriya. It's a dependent sukh. अगर इंडिपेंडेंट होता तो मुझे आज भी उतनी खुशी मिलनी चाहिए थी जितनी 1980 में मिली थी. तो हमें तो वो पॉइंट लेना है. हम कितने पराधीन हैं, लाचार हैं इन इंद्रियों पे. So that proves to us that it is important for us to reach that independent happiness that doesn't depend on these indriyas. So ये जो जोश है ना, when they are young, they think, oh, आज तो मैं तो पैसे से ये खरीद लूंगा, पैसे से ये कर लूंगा, वो कर लूंगा. वो भी with age सबको समझ आ जाती है, पैसा लो, you cannot do anything. So, yeah. In fact, that is one of my things to keep on hammering to my son. Even though, fortunately, my sons have some of this background, so they sort of have been hammered from childhood that money doesn't buy you happiness. But still, I keep reminding him that, because, that's the age, he has a fund. So his main goal is to make a lot of money. That's the business he's in. Prabhaji, it is true, money doesn't buy happiness, but money gives you opportunity. Yeah, but kya karoge at the end of the day? What's your goal? No, it gives you opportunity to spend time to do this. What we are doing is a luxury of having enough wealth to do this. If you are somebody who's living on the streets, working 3 jobs, you don't have time to do this type of stuff that we do. But so it then gives you there opportunity. Are people, no. It depends on their understanding of it. There are lots of people in India, in Maharashtra especially, who are not necessarily, even though in general they say Jains are affluent, as in society, that's a known fact. But it's not true that 100% of the Jains are very rich or anything like that. There are poor Jains also. And I go to these shivers in India. There are people in Maharashtra who are not well off. They don't have enough, and there are shivers where it's free. So it's made like that. So it's free. And then those who have the money can donate or sponsor and things like that. So obviously these people don't have money, but they have given it importance to do this.
And it doesn't bother them that they don't have as much. So no, that's not true. That if you don't have money, you cannot do this. Maybe it's a Western That's a idea Western because philosophy. they talk about it on NPR all the time. Yes. Yes. But no, I you guess don't. If now that was the case, the sadhu would not be happy. He has nothing. But yes, in certain context where you are burdened with all this more and you're burdened with other people telling you what to do. I remember feeling very proud that these TV ads cannot impress me enough for me to go get that item. To me, that's a great accomplishment. Versus everybody else, TV में देखा तो इच्छा हो गई वो चाहिए मुझे. मगर That's अभी so प्रभाजी, great. now the problem And is, I can say this. but No. now problem is Amazon में देखा वो चाहिए, अभी टीवी की ये गई. तो that is low life. Consider yourself. अरे मैं क्या कुछ भी नहीं हूँ यार. You know that उतनी importance आनी चाहिए ना. See, I don't have that luring towards those things. I don't need that to satisfy me. Okay. And in fact, I mean, even before this knowledge, I would say, I used to be proud to say, अगर मुझे कोई कहता था ना, I mean, I remember that we were in this Punjabi friends, right? You know how Punjabis have this style. They'll try to look down upon you. कि तुम तो ये भी नहीं खाते, आलू प्याज भी नहीं खाते, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, right? I had a very good answer for them. Hey, I don't need these things to make me happy. And then I know how to answer them. Because in this country, potato was like the cheapest vegetable you could buy at the time. I don't know if it is now because I don't buy it anymore. But it's all false. I would tell them, hey, you guys have false pride. Look what you're eating, like the cheapest vegetable. And what is there to be so proud of it that hum aloo pyaj kha sakte hain aur tum nahi kha sakte? And the gist of all that is to know that I can live without things. It's not a matter of ye kha sakta hu ki wo nahi kha sakta. It's a matter of that nothing I'm so attached to कि मुझे उसके बिना नहीं चलता. अगर कल मुझे कोई कह दे गोभी में खाए, no big deal, I'll quit it. I should have that power within me. Not be dependent on these things is That what is the bottom the line purpose is. is not कि ये खाया कि नहीं खाया, पर जब मुझे पता चल गया इसमें ज्यादा जीव है तो मैं क्यों खाऊं? I can do without it. I'm strong enough to do that. That's the purpose of it. Not just ritualistic कि मैं follow कर रही हूँ ये चीजें. Right. Prabhaji, we are 10 minutes past class time. If we can Okay. close and have our discussion. Let's give it a couple minutes how we're going to do the question answers. So, okay, chalo. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार. जय जिनेंद्र. So even when we do Vandana to Jinvani, it is Vandana to Sarvagya.